Good morning, everyone, and welcome to IDBI Capital Markets morning call. Now, what we will first start with is on the updates on market. What we saw yesterday is that markets did breach its year low, the calendar year low, and also breached the 52-week low. And we did close below it, and the trading was negative, and we lost almost more than 2% during the trading session. And on the monthly charts also, we have broken the downtrending line, and which now indicates that below 15,500 the correction can be very sharp. And we have been saying this from last few months that if we breach the year's low and the 15,500, then the correction can be very steep and very sharp, and correction can be as low as the levels. Still it cannot be said with some certainty, but yes, the correction can be as deep as 12,000, 11,000, or even 10,000 levels. So one needs to be very light in their trading positions. And also the list of 25 stocks which we had shared, that stock are in the quality stocks. So in these kind of falling markets, you can start an SIP into these stocks. But besides that, keep very light and very strict trading positions what you have. Stop losses are must, and if clients are not willing to take stop losses, then at least buy some puts as protection, so that their overall portfolio value would be saved, and their losses can be minimized. Again, I am saying that we need to be very careful. These kind of correction from last 14 years, we have not seen these kind of dips, and many of the clients who would have come in last 2.5 years would have never seen even a bear market or in normal corrective rally which we have seen like this. So we need to be very careful with them. Levels like 12,000, even 10,000 are possible. A correction, whenever it comes very sharply. We have seen that liquidity has also been drying up. So one needs to be very careful. Now, if you look at the derivative data for yesterday also, that also suggests a little bit on the negative tone. What we have seen, almost 5% of open interest addition, that is around 6.59 lakh shares, were short positions created in Nifty, and 11% of short positions which were added in Bank Nifty. So if you look at the overall positions for Bank Nifty, that has gone to almost 34 lakh shares, with 3.4 lakh shares adding yesterday. Now, if you look at the FII data, that also indicates a very negative tone. We saw index option worth buying of 10,000 crores. Some was attributed to the expiry which we had yesterday, but major of it did see, of additions in call writing and put buying, which again indicates a little bit of an, negative zone where, call additions have been in the strikes at much higher level at around 15,800, 15,900, 16,000 levels, and put positions where put have been added are at significantly low at 15,000, 14,800 levels. So that again shows that that addition or the put or index option buying is more of an hedge kind of a thing. And index futures, they have sold worth 1529 crores, and stock futures they have sold worth 1394 crores. Cash positions they have sold worth 3258 crores. So overall, the sell in almost all of the segments by the FIIs. If you look at India VIX also, now India VIX also has started to climb up from last 2 days. It wasn't showing much of an up move, but yesterday it did climb up to around 23 levels, and about 24, 25 previously also we have seen that the markets tend to make a very volatile move. So again, that needs to be taken care of. All the indicators are not giving a very rosy or a gloomy picture. It's giving a very negative picture or overall. So again, I'm stating that we need to be very careful in these kind of markets, and to markets from these current levels to take out 1,000, 1,500 or 2,000 points for Nifty. It would be very easy. We have seen these kind of corrections previously also in 2008 and 2003. 2012, 13 also some similar kind of corrections had come, but the magnitude was not same in 12 and 13. So we need to be careful. The clients which are there in fresh in the markets, they need to be taken care of. And if they are not willing to lower down their positions, then hedges are mandatory to be put in. So with that, I'll hand it over to Bunty sir for research updates. Thank you, Miraj. Good morning, team. Few updates, few news updates from my side. Firstly, starting with the IT TCS.
TCS has announced that it has been selected by Kaizen, a global player in life sciences and molecular diagnostic domain, for its cloud transformation journey. As part of this deal, TCS will migrate the workload of Kaizen from legacy data center to Microsoft Azure. Health science vertical has been seeing good demand. If we look at the contribution of this vertical to the overall revenue of the TCS, it has grown from 7%, which was in FY17, to 10% currently, and it's a similar story for Infosys as well. So this bodes very well for TCS from its future earnings perspective. Similarly, in the IT, second is the Cyan. Cyient has announced the appointment of Prabhakar Shetty as the Chief Digital Officer of the company. He will lead digital strategies to expand the digital footprint of the company by growing the service lines related to manufacturing and products and platforms. He has over 3 decades of experience in the consulting and technology business, and prior to this appointment, he has headed large business lines in digital, manufacturing, cloud engineering, and other domains. This bodes well for Cyient, as Prabhakar Shetty will help the company expand the digital technology business, which is seeing immense demand globally. Currently, we are very much bullish or very much positive on the Cyient with a buy rating with a target price of 1100. Next news is on the Indian hotels. Indian hotels has announced the opening of Vivanta Katra, Vaishno Devi in Jammu and Kashmir. It is a strategically located on the Jammu Katra highway. The 77-room Vivanta Katra offers travelers view of the mighty Himalayas. The hotel features stylishly designed rooms and suites, including a Vivanta suite, which spread across 176 square meters and is one of the largest in the city of Katra. With the addition of this hotel, now Indian hotels will have 5 hotels in Jammu and Kashmir, including 3 under development. And we know Jammu and Kashmir is now picking up with respect to tourist places. In FY22, company has 235 hotels in portfolio, including hotels under development, and under Avan 2025, the company will expand portfolio to hotels to 300 plus, which is the target for the company by 2025-2026. So we are very much bullish and have a buy rating on the stock with a target price of 278. Next, on the cement sector, uh, recently yesterday we have came out with the update on the cement sector. What we have observed of late, Street has cut estimates, earning estimates, and the valuation multiple for the stocks in the cement sector. Now, why? The key reasons surrounding this sector are: first, capacity addition is happening more than the demand, which could lead to lower plant utilization by FY 2025. Second, lower price hike versus cost inflation, which could lead to weak EBITDA per ton. And last, verdict on CCI penalty. And we know the amount from the penalty, which equals to 26 to 95% of the full year profitability of certain companies. In this gloom scenario, outlook for the sector will change once price hike is taken. Historically, also we have taken when the price hike happens, sentiments change for this sector, or there is a correction in the energy cost. Specifically, crude oil, which we are seeing, is slightly coming down from highs of $120. In terms of timeline, price hike could be attempted by players post monsoon, because the monsoon is the somewhat lag season. Some other positive in the sector are: new capex announced is at a competitive rate. Thus, for 15% ROC, the EBITDA per ton required will be lower. Second, valuation in the sector is benign now. Valuation on price to book value is now below historical averages. Also, other highlights which suggest is that consensus in Q1 FY23 has cut Ultratech EPS by 10% and expects EPS to increase by 4% in FY23 and 28% on a YY basis in FY24. Also, CCI penalty. As per media reports, CCI is expected to give its verdict whether cement companies indulge in price coordination in 2010. CCI has earlier penalized cement companies, which was subsequently stayed by the Supreme Court.
Overall, what we have observed, we remain bullish and remain stock specific in cement sector. Lastly, RBI has lifted an 11-month ban on issuance of new cards by Mastercard after the card network with the required regulatory compliances on data storage guidelines. In view of the satisfactory compliance, RBI, this order does not impact the customers of the Mastercard who already been onboarded on the ban before the ban, which was imposed by the central bank. However, with this opening up of the Mastercard, as we have observed, few mid-cap private banks like RBL and City Union have the tie-up with the Mastercard for the credit card. Now that will have a good positive impact on the stocks as such. So that's it from my side. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. Now to take more further research of this. Yesterday, we see then jet fuel price hiked by 16%. So it was hiked by near about 19,750 cents per kiloliter, and at 1 kiloliter cost is around 1,41,232 rupees. So this would be the steepest hike over. And according to the SpiceJet and other airlines, our operator also thinking to raise their fares because due to rising fuel cost. Glenmark Pharma has launched its first FDC drug, Indamate, for asthma patients. This is a novel dose fixed dose combination that is this is basically for uncontrolled customer, and this would be Indacetrol and Mometasone that would be under brand name Indamate. Strides Pharma arm also get an EU GMP certification for 2 facilities in Hungary, and the certification of manufacturing Hungary National Institute of Pharmacy. Stelis Biopharma, an emerging biopharmaceutical and vaccine contract development manufacturer, and Biologics arm got this certification in Europe. At 42,679 crore, advanced tech collection stood up at by 48% April to June quarter. This is a good collection overall, if you see. And personal income tax collection also stood by 52.4% in Q1 at 15,881 against 10,442 crore last year from April 1 to June 15. Thirdly, if you see then Teleco's department has issued a notice for Holdings 5G spectrum auction with related conference on June 20, and they had released a data also. Reliance Jio gained 16.8 lakh mobile subscribers in April, which is a leader in the market, and Bharti Airtel added also 8 lakh users as per the data released by the TRAI. Tata Motors, its subsidiary JLR, is facing headwinds in China because of lockdown. First of all, and secondly, the global supply chain issues also there because of war caused in the Ukraine and difficult macroeconomic conditions. So these problems may impact financially in GR in FY23 as per the annual report because they have to stop the production in some of the plants. SDFC, the largest mortgage, have invoked 50 lakhs plus share of unsell housing, a part of recovery of its outstanding dues from developer. Unsell Housing engaged in business of construction and development of residential, township, and commercial complexes. Zomato has also postponed its board meet because they are going to acquire the quick commerce that is Blinkit, earlier known as Grofers. As per the reports, the deal was earlier valued at 700 million. Now they are doing as a share swap, a stock swap deal. So 1:10 is a swap ratio. So Zomato would get 10 shares of Blinkit for every one of its shares. Everyday Industries, the Burmans of Dabur have acquired 14.3 additional stake in an open offer made to public shareholders. And so the total shareholding in the battery maker has 38.3 post the transaction. And post the transaction, Burman also becomes the dominant shareholder in the Everyday Industries. And so they will be operating Everyday and Dabur as two different entities also. Tata Power is planning to buy coal worth rupees 12,000 crore from Indonesia miner, and saying this deal would be give the fuel without interruptions also. The company owns 30% stake in the mine, and order will be related to related party transaction only. Grasim Industries firm has also announced the appointment of Pawan Jain as the next CFO effective from 15 August, and the incumbent Ashish Adukia plans to pursue career opportunity outside Aditya Birla Group. RITES have also bagged a contract of 364.5 crores from Concord India, Container Corporation, that is, and this order pertains to operation and maintenance of shunting locomotives for next 10 years. So that's it from mine. I'll hand over to Miraz sir for more updates. Thank you. थैंक यू हितेंद्र एंड बंटी सर फॉर ऑल दोज अपडेट. अब इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सबसे पहले बात यह है कि मार्केट्स की कल आप अगर देखोगे तो
15,500 के नीचे मार्केट्स जाता हुआ दिखा था, और कल 2% से ज्यादा का करेक्शन मार्केट्स में देखा गया था। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि यदि ईयर लो मार्केट्स ब्रेक करता है और 15,500 के नीचे सस्टेन करता है तो करेक्शन काफी स्टीप हो सकता है। और कल हमने देखा कि मार्केट्स 15,300 के आसपास आ चुका था, और यहाँ से यदि करेक्शन शुरू होता है तो करेक्शन काफी डीप होगा। दिवाली तक हमें लगता है कि मार्केट्स में ओवरऑल वीकिश टोन रहेगा, और करेक्शन जो है वो पिछली तरह कैसे नहीं होगा जहाँ कैसे 10-12% का करेक्शन होगा। ये करेक्शन काफी डीप होगा। मे बी काफी लोगों ने इतना डीप करेक्शन देखा नहीं होगा, तो हमें लगता है कि यहाँ से लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, 12,000, 11,000 या 10,000 भी आ सकता है। पर जो भी रहेगा करेक्शन, एक काफी स्टीप और काफी लंबा करेक्टिव मार्केट रहना चाहिए। ओवरऑल ट्रेडर्स जो है उनको अपनी पोजीशंस लाइट बना के रखनी चाहिए, और जो भी क्लाइंट्स यदि अपनी पोजीशंस लाइट करना नहीं चाहता है पर तो उन्हें एटलीस्ट हेज लेके चलना चाहिए, या तो पुट्स निफ्टी के बाय करके चलना चाहिए, जिसकी वजह से ओवरऑल जो लॉसेस है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल उसके अलावा भी यदि काफी सारे क्लाइंट्स जो हमारे साथ जुड़े होंगे पिछले 2 साल में, उन्होंने कभी भी कोई करेक्टिव या बेयर फेज नहीं देखा होगा, तो उन्हें भी ये समझाना होगा कि ओवरऑल इसमें इस मार्केट्स में यदि करेक्शन होता है तो 50% करेक्शन भी हुआ है। पहले 2008 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, और हमने देखा है कि वो जब भी करेक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है, उसमें फिर एग्जिट के चांस नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो तो उसके लिए पहले से या तो हेज लेके रखे, या तो क्लाइंट्स को बोलिए अपनी पोजीशंस लाइट रखे। इवन जो 25 स्टॉक्स का जो लिस्ट हमने शेयर किया था, वो सारी क्वालिटी कंपनीज है। यदि कोई क्लाइंट लंबे टाइम के लिए शेयर्स बाय करना चाहता है पोर्टफोलियो में, तो उसमें एसआईपी से बाय कर सकता है, एक ही शॉट पे नहीं। मैं वापस बोलूंगा कि उन स्टॉक्स को एसआईपी में बाय करना है हर महीना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल वीक रहेगा आने वाले 3 से 6 महीना। दिवाली तक हमें लगता है कि ये वीक टोन रहेगा, तो एसआईपी के द्वारा इसको बाय करना है, एक ही शॉट में सारा अभी नहीं बाय करना है। वापस मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट्स जिस लेवल्स पे है यहाँ से एक शार्प करेक्शन आ सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये करेक्शन 12,000 पे खत्म हो, 11,000 पे खत्म हो, या 10,000 पे खत्म हो, वो बोलना अभी मुश्किल होगा। पर हाँ, एक डीप करेक्शन आ सकता है, वो हमें यहाँ से दिख रहा है। इसके अलावा अब रिसर्च न्यूज़ की बात करें तो टीसीएस ने अनाउंस किया है कि काइजन ने उन्हें सिलेक्ट किया हुआ है। ओवरऑल काइजन जो है ग्लोबल प्लेयर है लाइफ साइंस और मॉड्यूलर डायग्नोस्टिक्स में, उनका क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यदि आप देखोगे तो ये क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन करंटली जो काइजन है वो ओवरऑल माइग्रेट करेगा डेटा सेंटर से माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पर। और इस तरीके के क्लाउड माइग्रेशंस की ओवरऑल देखोगे तो रेवेन्यू का शेयर जो है वो टीसीएस में बढ़ता दिख रहा है। पहले 7% था FY17 में, अब 10% है, और सिमिलरली इन्फोसिस के लिए भी ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा आईटी के लिए। आईटी पे ही साइंट में यदि आप देखोगे तो उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रभाकर शेट्टी जो है वो उनके चीफ डिजिटल ऑफिसर रहेंगे, और ओवरऑल वो डिजिटल स्ट्रेटजीज और एक्सपेंशन के को लीड करते हुए दिखेंगे। इसके पहले भी कई सारी बड़े रोल्स इन्होंने किए हुए हैं। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव होगा साइंट के लिए भी। इंडियन होटल ने अनाउंस किया है कि वो उन्होंने कतरा वैष्णव देवी में विवांता का एक होटल खोला है। तो यदि आप देखोगे तो ये जम्मू और कश्मीर में उनकी तीसरी होटल होगी। ये स्ट्रेटेजिकली हाईवे पे लोकेटेड है, और 77 रूम्स की होटल है, जिसमें ओवरऑल 176 स्क्वायर मीटर्स में ये स्प्रेड हुई है, जो कतरा में सबसे बड़ी होगी। और ओवरऑल सभी तरह की फैसिलिटीज इसमें होगी। यदि आप देखोगे तो FY22 में कंपनी के पास 235 होटल है उनके पोर्टफोलियो में, और आह्वान स्कीम के अंतर्गत वो क्या चाहते हैं कि 2025-26 तक वो इस टैली को 300 होटल्स के पार लेके जाए। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा इंडियन होटल्स के लिए। सीमेंट पे कल हमने एक रिपोर्ट इशू की है, जिसमें हमने कहा है कि हाल ही में देखा गया कि पिछले 1 से 2 क्वार्टर्स में काफी अर्निंग कट्स हुए हैं और वैल्यूएशन ट्रिगर हुए हैं सीमेंट्स में। की कंसर्न ये है कि ओवरऑल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वो डिमांड से अतिरिक्त है, और ओवरऑल यदि देखोगे तो लोअर प्राइस हाइक्स और कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से और फ्यूल ओवरऑल जो सीसीआई की पेनल्टीज आ रही है, कहीं कहीं कंपनीज में सीसीआई की पेनल्टीज 26 से 95% उनके फुल ईयर प्रॉफिट के आसपास की आ रही है। तो इन सभी कारणों से हमें दिखा था कि सीमेंट कंपनीज में काफी एक ब्लीक आउटलुक बनता हुआ दिखा था।
आने वाले समय में हमें लगता है कि यदि प्राइस हाइक होगी तो वो एक अच्छा ट्रिगर हो सकती है, या तो एनर्जी प्राइसेस में करेक्शन होगा तो वो अच्छे ट्रिगर होगे। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी कंपनियां अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक और एसीसी, ये दो स्टॉक्स हमें लगता है कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, जिसमें कि ओवरऑल स्टैगर्ड मैनर पे बाइंग होना चाहिए। और प्राइस हाइक्स भी हमें लगता है कि मानसून में नहीं आएगा, मानसून के बाद ही प्राइस हाइक्स आता है। जनरली मानसून एक लल पीरियड रहता है सीमेंट कंपनीज के लिए। तो थोड़े समय में और भी अभी कंसोलिडेट हो सकते हैं सीमेंट स्टॉक्स, पर उसके बाद इस पे एक ओवरऑल ध्यान दिया जा सकता है कि मानसून के बाद यदि प्राइस हाइक्स आती है तो ये सीमेंट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव होगा। आरबीआई ने कहा है कि मास्टर कार्ड को जो 11 महीने से उन पे बैन लगा था नए कार्ड्स इश्यू करने को, वो बैन अभी लिफ्ट हुआ है। और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी और कंप्लायंस थी डेटा स्टोरेज गाइडलाइंस की, वो अभी फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो ये एक ओवरऑल पॉजिटिव होगा। सीयूबी ने देखा तो यदि मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया हुआ था, तो आने वाले समय में ये एक ओवरऑल पॉजिटिव होगा मास्टर कार्ड और सीयूबी के लिए। जेट फ्यूल के प्राइसेस जो है वो काफी हद तक बढ़े हैं, नए रिकॉर्ड्स पे है ऑलरेडी। 16% से हाइक किया है और ये स्टीपेस्ट हाइक है अभी से। अराउंड 19,757 रुपये का हाइक किया हुआ है प्रति किलो लीटर का। और करंट मौजूदा प्राइस यदि आप देखोगे जेट फ्यूल का, तो वो है 1,41,232 रुपये। तो ये हमें देखा गया कि काफी स्टीप हाइक है, और इसके चलते हुए सभी एयर एयर फ्लाइट्स की जो टिकट्स है वो और महंगी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हल्का सा पॉजिटिव होगा एयरप्लेन्स के लिए, एयरलाइन स्टॉक्स के लिए। पर मौजूदा मार्केट सिनेरियो में देखा जाएगा तो ये ओवरऑल इतना इम्पैक्ट स्टॉक पे आता हुआ नहीं दिखेगा। ग्लेनमार्क ने कहा है कि उन्होंने फर्स्ट एफडीसी डक इंडामेंट अस्थमा के लिए लॉन्च किया हुआ है। ये ओवरऑल नोवेल फिक्स्ड डोज रहेगा, कॉम्बिनेशन डोज रहेगा। और ये पेशेंट्स को ओवरऑल अनकंट्रोल्ड अस्थमा जो रहता है उनके लिए एक अच्छा होगा। और मुंबई बेस्ड जो ड्रग मेजर है उन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है इंडासिटोल और मोनोमेटेसोन एफडीसी के अंडर के ब्रांड्स के साथ। स्ट्राइड फार्मा को ईयू जीएमपी सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनकी 2 फैसिलिटीज हंगरी में। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा स्ट्राइड फार्मास के लिए। स्टर्लिस बायोफार्मा जो एक इमर्जिंग बायोफार्मास्यूटिकल और वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, उनको उनके बायोलॉजिक्स आर्म जो है वो स्ट्राइड फार्मा का बायोलॉजिकल आर्म है यूरोप में, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा। यदि एडवांस टैक्स के कलेक्शन देखोगे तो एडवांस टैक्स कलेक्शन 42,680 करोड़ के आसपास आए हुए हैं। ये ओवरऑल पिछले क्वार्टर से 48% ऊपर आए हुए हैं। काफी कंपनीज की तरफ से भी एडवांस टैक्स काफी हेल्दी भरा हुआ है। इसके अलावा यदि देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स में भी काफी अच्छी खासी बढ़त देखी गई थी। टाटा मोटर्स ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि यूरोप साइड में जीएलआर की जो प्रोडक्शन है उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से ओवरऑल यूरोप साइड में जीएलआर का जो प्रोडक्शन और सेल्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। एचडीएफसी ने जो अंसल हाउसिंग के जो प्लेज के शेयर थे 50 लाख शेयर उसको रिवोक किए हुए हैं। बेसिकली जो अंसल हाउसिंग ग्रुप था वो रियल एस्टेट में था, तो ओवरऑल उनकी लोन्स ना चुकाने की वजह से ये रिवोक हुआ है। जोमेटो ने अपनी बोर्ड मीट है उसको डिफर कर चुका है करंटली। उन्होंने कारण बताया है कि वो ग्रोफर्स को एक्वायर करने के उसकी वजह से ये बोर्ड मीट डिफर हुई है। पहले ये ऑल कैश डील होने वाली थी, पर अब लगता है कि स्टॉक स्वैप से होगी। 1:10 स्वैप रेशियो दिया गया है करंटली, यानी कि हर 10 शेयर के ग्रोफर्स के सामने एक शेयर जोमेटो का होगा। इसके अलावा देखोगे तो बर्मास ने 14.3% स्टेक अक्वायर किया है एवररेडी से ओपन मार्केट से। इसके चलते हुए ओवरऑल जो स्टेक है उनका 48.3% पे आता है, और अभी ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुके हैं एवररेडी में। तो ये ओवरऑल देखना होगा कि कैसे प्ले आउट होता है स्टॉक के लिए। टाटा पावर ने कहा है कि वो 12,000 करोड़ का कोल इंडोनेशिया से इंपोर्ट करेंगे, जिसके चलते हुए ओवरऑल उनको जो कोल सप्लाई है वो एक कांस्टेंट कोल सप्लाई मिलती रहे। इवन राइट्स को अगर आप देखोगे तो 364.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कॉनकॉर से। ये ओवरऑल लोकोमोटिव और मेंटेनेंस के लिए होगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा इवन राइट्स के लिए। सो दैट्स इट ऑल फ्रॉम आवर एंड, विल कंक्लूड द कॉल ओवर हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। और कॉल खत्म करने से पहले मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी क्लाइंट के पोजीशंस जो स्टक हो चुके हैं, तो आप मुझे या प्रभाकर सर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरा और प्रभाकर सर के नंबर्स अवेलेबल है पैक्स लिस्ट में। और प्लीज क्लाइंट्स की पोजीशन मौजूदा स्तरों पे लाइट करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट्स में काफी स्टीप करेक्शन
आ सकता है यहाँ से. So that's it all. We'll conclude the call over here. Thank you everyone for joining in.